Hello, Ananto. Am I audible? Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. ठीक ठीक ठीक. Just wait few minutes. Just wait, I am sharing my screen. तुम लोग का कहाँ तक हुआ है आनंदो? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है क्या? नो सर, नहीं हुआ। लॉरेंस तक नहीं हुआ है ना? अच्छा, नहीं हुआ नहीं सर। सर। ठीक ठीक ठीक. तो आज हम लोग टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. ओके. कहाँ रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट दे नॉट इंटर? कहाँ गया बच्चा? आनंद तो खबर हुआ था. यस सर, कवर कर दिए थे। मेल भी सबको और किए. रोहन अभी ज्वाइन कर रहा है सर। जस्ट कवर तो कर दिया था ग्रुप में सबको। अच्छा, आने दो आने दो. क्योंकि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट है. लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इज द इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर. नहीं तो फिर ये सिलेबस ही मतलब हमारा जो स्पेशल जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यही कंप्लीट नहीं होगा. सो रोहन गोप इज इंटर इनटू दिस क्लास. रोहन गोप. सो नाउ स्टार्ट. है ना? जब आएगा कोई तो देखा जाएगा. है ना? So postulates of first we know about the postulates of special theory of relativity. There are two postulates of special theory of relativity. There are postulates of these are the postulates of special theory of relativity. First is the fundamental laws of physics have the same form for all inertial system. Here I have not written. यहाँ हम नहीं लिखे हैं लेकिन बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो. फर्स्ट पॉइंट इज द फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स हैव द सेम फॉर्म फॉर ऑल इनर्शियल सिस्टम. दैट इज फॉर ऑल reference system at rest or moving with constant linear velocity relative to one another. Again I will repeat this point. First point of the postulates of special theory of relativity is the fundamental laws of physics have the same form for all inertial system. That is for all reference system at rest or moving with constant linear velocity relative to one another. And second point of the postulates is the velocity of light in vacuum is independent of the relative motion of the source and the observer. The velocity of light in vacuum is independent of the relative motion of the source and the observer. These are the two postulates. So, in your internal exam, it may be asked. सर निर्मल को एंटर कीजिए सर। अच्छा अच्छा ठीक. Ananto, when your internal exam will can see, sorry, I have load all the notes of this chapter, and already notes has to be prepared. Okay, now
when your internal exam was will be completed, then after that, when this chapter is repeated, means after 26th June, when class will start, then again these things will repeat, है ना. 2 दिन लगेगा मैक्सिमम. एक बार चूंकि बताया हुआ रहेगा, तो उस समय पूरा नोट्स को हम LMS पे अपलोड करेंगे, या अनंतो अनंतो तुम उसको हमसे कलेक्ट करोगे. ठीक है, ठीक है सर. और शेयर कर देना सभी कैंडिडेट में, पूरा इस चैप्टर का जितना भी ठीक है सर. है ना. ठीक है, चलो. ठीक है सर. न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन states about the speed of light c, इसको बोल रहे हैं, must have the same value in every inertial frame. Speed of light must have the same value in every inertial system. Now here I have written for point 2, V is very much less than C, means transformation must be linear, and for low speed, for V is very much less than C, it should approach Galilean transformation if velocity of any inertial frame of reference is very much less than the velocity of light, c, speed of light, then it approaches the Galilean transformation. And last point is, it should not be based on absolute time and absolute space. New transformation equation does not depend upon this absolute time and absolute space. According to this, we are talking about Lorentz transformation. ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसका क्वेश्चन आएगा ही, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. In this Lorentz transformation, Lorentz introduced transformation. Just a minute. Lorentz introduced transformation equation relative to the observation of position and time. Position here and time made by two observers. मान लो O और O dash पॉइंट में ऑब्जर्वर है, तो मेड बाय टू ऑब्जर्वर्स एंड इन टू डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स आर नोन एज लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. Again I will repeat the statement. Lorentz transformation equation relates the observation of position and momentum by two observers in two different inertial frames are known as Lorentz transformation equation. So here there are two inertial frames. S and S dash are the two inertial frame of reference, and O and O dash are the origin of both the inertial frame of reference. X, Y, Z and T are the coordinates of this S frame of reference, and X dash, Y dash, Z dash, T dash be the coordinates of S dash frame, inertial frame of reference. Now this S dash inertial frame of reference here, this inertial S dash frame of reference having uniform velocity relative to S. S dash frame of reference v velocity के साथ मूव कर रहा है. किसका रिलेटिव? S frame of reference का रिलेटिव. So here at O and O dash, origin O and O dash, there are two observers are kept in these origins, and they observe
at any event at this point P, any event at P from S and S dash. Now, if X and here X axis of both the inertial frame coincides and the velocity is parallel to x. हम लोग गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन में भी क्या बोल रहे हैं? Here both the frames are coincides at time t is equal to t dash is equal to 0. आया था ये लैंग्वेज. तो वही चीज यहाँ पर है कि O और O dash ओरिजिन में दो ऑब्जर्वर्स है. वो इवेंट P में देख रहा है कि S और S dash फ्रेम के आधार पर कौन सा इवेंट हो रहा है. सो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ऑफ these two systems coincides and the velocity here, the velocity is parallel to x axis. So the event P is a light signal and is produced when both t and t dash are 0. Means when both the frame or inertial frame of reference S and S dash coincides, it means t is equal to t dash is equal to 0 and origin of the two frames are coincides. So the event P, this event P is determined by coordinates x, y, z, t and x dash, y dash, z dash, t dash by two observers O and O dash. Just a minute, Vivek Kumar Giri. So the light pulse produced at event P. So the light pulse produced at t is equal to 0 will spread a growing sphere and radius of wavefront produced with a speed c. If both these frame of reference are coincides at t is equal to 0, then sphere will be grow and the radius of the wavefront produced with speed c. So here x, y, z, t are the coordinates from observer in system S, and this S system or inertial frame of reference is to be at rest. So equation of spherical surface whose radius grow with speed c, we can write x square for S dash frame of reference, x square plus y square plus z square equal to c square t square, or x square plus y square plus z square. Here minus, we can write minus c square t square is equal to 0, equation 1. Similarly, observer O dash in system S dash having coordinates x dash, y dash, z dash, t dash of P, look my cursor, of P, the equation of spherical surface can be written as x dash square plus y dash square plus z dash square is equal to c square t dash square for this S dash frame of reference. Now it can be written as x dash square plus y dash square plus z dash square minus c square t dash is equal to 0. This is equation 2. Now combining equation 1 and 2, combining equation both the equation 1 and 2, so we can write x square plus y square plus z square minus c square t square, combining plus x dash square plus y dash square plus z dash square minus c square t dash square equal to 0. So it can be solved and we get x square plus y dash square plus z square
minus c square t dash square is equal to lambda. Lambda be a undetermined constant. We have taken a constant x dash square plus y dash square plus z dash square minus c square t square. After combining these two equations 1 and 2, we get this equation, and here in this equation lambda be a undetermined constant. Now as this velocity of this as this inertial frame of reference is along the x-axis, from symmetry we can write y is equal to y dash and z is equal to z dash, and this equation is suppose 3. From equation 1 and 2 we have, if we put the value of y is equal to y dash here in equation 1 and z dash is equal to z dash, here z square means here if we put the value of z means z dash is square, that in that case we got x square plus y dash square plus z dash square minus c square t square is equal to, here is equal to lambda this part. So if here y dash and z dash is given here according to equation 3, then this y dash square and z dash square in the both sides LSH and RHS will be cancelled. So x square, rest part is x square minus this c square t square. So in left hand side rest part is this part is equal to lambda. Here lambda I have written, and again in this part x square x dash square minus c square t dash square is having. So this is equation 4. Now for transformation equation relating to x dash, we know that x is equal to gamma x minus bt. x dash is equal to x minus bt आया था, याद करो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में. तो according to for transformation equation relating to this x and x dash axis, we can write x dash is equal to gamma x minus bt, gamma into x minus bt. Here equation 5. In equation 5 gamma is being independent of x and t. Suppose this motion, the motion is relative. Here according to this diagram, if the motion is relative, we assume that S inertial frame is relative to S dash with negative direction along this x-axis, means it moves along anti-clockwise. So here equation 5 can be written as x dash is equal x is equal to gamma x dash plus bt dash. Equation 6, on putting the value of here equation 6 is coming because S is moving relative to S dash with velocity negative direction along x-axis. So in that case, here in place of x dash we can write x is equal to gamma. Here in place of x dash we can write in place of x we can write x dash plus negative sign it moves in anti-clockwise direction, so negative sign will arise. So negative into this negative positive plus b into t dash. Here we can write in place of bt b into t dash. So this is equation 6. On putting the value of equation 5 in 6, 5 का वैल्यू को 6 में पुट कर रहे हैं, तो x is equal to, here I have written x is equal to gamma x dash. The value of x dash is given here, gamma into x minus bt. So here
this part is written plus equation b into t days. So here b into t days I have written. हाँ संजय सर, नहीं क्लास में किसको, किसका, मेरा पता नहीं उसका कहाँ गया हो, नहीं है खाना खाने गया होगा। जस्ट वेट, मोबाइल नंबर, अच्छा हम फोन कर रहे हैं आपको, दे रहे जस्ट वेट। ओके सर। है ना, जस्ट वेट, संजय सर फोन किए थे, तारा सर का नंबर देना है, जस्ट वेट। ठीक है सर। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो अभी यहां तक। इज देयर एनी डाउट? Okay, now let us start. So on putting the value of equation 5 in 6, 5 का वैल्यू को 6 में हम लोग पुट करेंगे। तो 5 में क्या है, x डेस, सॉरी 6 में x इज इक्वल टू गामा, इन प्लेस ऑफ दिस x डेस का वैल्यू क्या है, यहां पर दिया हुआ है ये पार्ट, गामा इंटू एक्स माइनस बी टी, तो यहां पर लिख दिए प्लस v इंटू टी डेज, इक्वेशन 6 में v इंटू टी डेज, तो ये आ गया। अब here according to this equation we can solve and we can find out the value of t days. So t days is equal to gamma, यहाँ हो जाएगा t माइनस एक्स डिवाइडेड बाई b इंटू यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 बाई गामा स्क्वायर। इसको करके देखोगे, इक्वेशन 7, तो इक्वेशन 7 gives the value of t days, equation 5 gives the value of x days. So on putting the value of equation 5 and 7 in this equation 4 में उसका वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। तो इक्वेशन 4 में जब वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन 4 क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, हाँ संजय सर लिखिए 96470 459, ठीक। हाँ, अभी हम क्या कर रहे हैं कि 6 का वैल्यू को 7 में पुट किए, सॉरी एकदम मिस हो गया दिमाग से, इक्वेशन 7 आया। अब इक्वेशन 7 में ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 7 इन 4, 5 और 7 का वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये पार्ट को लिख दिए यहाँ पर, क्या इज इक्वल टू लैम्डा, तो हियर आई हैव रिटन लैम्डा एक्स डेस स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ एक्स डेस इज गिवन इन इक्वेशन 5, दैट इज गामा इंटू एक्स माइनस बी टी, तो हियर गामा into x minus vt, but
यहाँ क्या दिया हुआ है, स्क्वायर स्क्वायर, देखो तो इक्वेशन 4 में एक्स डैश स्क्वायर, तो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो गामा स्क्वायर एक्स माइनस बी टी होल स्क्वायर minus, here minus this sign, c square t dash square. So c square is written here c square, and the value of t dash is given here, this part equation 7. So t dash square means here we can write gamma square and t minus x divided by b 1 minus 1 by gamma square whole square, because here square is given here t dash square. So on putting the value of t and it can we can write power. So x square minus c square t square is equal to sorry, this part ये part इधर आ रहा है, ये part lambda gamma square x minus bt square. So here lambda gamma square x minus bt means a square a minus b whole square, a square minus 2ab plus b square. So this part is written here plus here gamma, this part is multiplied with c square and gamma square. So lambda c square gamma square is again right here written here, and this t minus x by b root under sorry into 1 minus 1 by gamma square whole square. So this part means here that t minus x by b, t is a and this part is b, a minus b whole square. On solving this part, a square means t square minus a minus b whole square, a square minus 2ab, 2 into a means here I have written 2xt divided by b into b. This b means 1 minus 1 by gamma square. B part is this x by b into 1 minus 1 by gamma square. So a minus b square can be written here in this form, t square minus 2xt divided by b 1 minus 1 by gamma square plus this x by b 1 minus 1 by gamma square. So here x into x square divided by b square into here 1 minus 1 by gamma square whole square. So gamma to the power 4 is equal to 0, equation 8. Now after getting this equation 8, we are writing a language. The language is that the coefficient of various powers of x and t must vanishes. So equating coefficient of x square and t square is equal to 0. When this part is 0, then must vanishes. So here according to this we can write 1 minus lambda gamma square plus this part, and means lambda gamma c square gamma square divided by b square. This part is written here again 1 minus lambda gamma square plus lambda c square gamma square divided by b square. Here a minus b whole square. So a square minus 2ab plus b square. A is 2 minus 2ab, 2 into 1 into b. B means 1 by gamma square. 2 into 1 divided by gamma square is equal to 2 by gamma square plus b square. So b part is 1 by gamma square. So 1 by gamma to the power 4 is equal to 0, or 1 minus lambda gamma square plus this part is written here. So, and this gamma square is multiplied with this 1 minus 2 by gamma square plus 1 by gamma to the power 4. So here gamma square into 1 is gamma square minus 2 into gamma square divided by this gamma square. So gamma square will cancel. So rest part is 2 plus here 1 into gamma square means gamma square divided by gamma to the power 4.
So gamma to the gamma square and gamma to the power 4 we can say S part is 1 by gamma square is equal to 0. Equation 9. When equating coefficient of x square to 0, equation 9 will come. Again, equating coefficient of x2 to 0 in this equation, equation 8. Then we can write this equation. So here 2 gamma square b, if we are taking lambda as a second, lambda as a common, then 2 gamma square b minus here this part is multiplied with this part also. So rest part is 2c square gamma square b 1 minus 1 by gamma square is equal to 0. तो सॉल्व करके देखना होगा. तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर v स्क्वायर, यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये v स्क्वायर गामा c माइनस c स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस दिस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इक्वेशन 10. इक्वेशन 10 कब मिल रहा, व्हेन we equating coefficient of x2 to 0, तब इक्वेशन 10 मिल रहा है. नोट्स जब देंगे तो पूरा क्लियर रहेगा लिखा हुआ. नाउ अगेन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 जब कर रहे हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 8 में, तो ये पार्ट मेरा आ रहा है ये. अब इसमें क्या है कि लैम्डा लैम्डा ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इस पार्ट को लिख सकते हैं इंटू गामा स्क्वायर, ये गामा स्क्वायर क्रसर को ध्यान दो, प्लस हियर क्या आ जाएगा सी स्क्वायर, रेस्ट पार्ट इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इक्वेशन 11. तो फ्रॉम इक्वेशन 10 एंड 11, फ्रॉम इक्वेशन 10 एंड 11 दोनों इक्वेशन में देखो, यहाँ क्या v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी देखो मेरा वही चीज है, v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. When this according to this equation 10 and 11, lambda is equal to, we can write lambda is equal to 1. यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, lambda बच रहा है इस दोनों इक्वेशन के आधार पर. lambda is equal to 1. So equation 10, yeah, this equation give गामा, ये गामा स्क्वायर है, गामा स्क्वायर है, इसको हम क्या करेंगे, सी स्क्वायर इधर आ जाएगा, सी स्क्वायर राइट साइड आ गया, तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये पार्ट आया v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. सी स्क्वायर को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया अपर पार्ट में, और इसको v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको भी डिवाइड कर रहे हैं सी स्क्वायर से. ये सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर कैंसिल होगा तो 1 आ गया, माइनस यहाँ क्या बच रहा है, ये बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, इसको भी तो मल्टीप्लाई किए थे, तो इक्वेशन 12 आया. अब ये जो इक्वेशन 5 है, इक्वेशन 5 मींस x डैश इज इक्वल टू y इंटू x माइनस बीटी, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 30. x डैश इज इक्वल टू y नहीं सॉरी gamma x dash is equal to gamma x minus bt is suppose we are taking equation 13. So from equation 7 के आधार पर, equation 7 means t dash, the value of t dash is equal to gamma t minus xy v 1 minus 1 by gamma square, means equation 7 can be written here from equation 7. Equation 7 ये है, तो t dash is equal to gamma t minus x by v. गामा is equal to, इक्वेशन 5 में ये पार्ट मेरा दिया हुआ था देखो, सॉरी इक्वेशन 12 में दिया हुआ था ये पार्ट, गामा is equal to 1 by रूट अंडर 1 minus v square by c square, इतना आया था. ठीक है, इक्वेशन 7 का स्टेटमेंट मेरा ये है, टी डैश इज इक्वल टू दिस पार्ट. तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, टी डैश इज इक्वल टू गामा टी माइनस एक्स बाई वी 1 माइनस 1 by gamma square. So here the value of gamma is given here. When we aspiring
the value of gamma, then we will get c square minus here 1 by 1 minus sorry c square minus b square divided by c square. ये रूट हट जाएगा, एलसीएम ले लेंगे c square. So in that case we can write 1 by gamma square is equal to c square minus b square divided by c square. Now TDS is equal to gamma here x by b into 1 minus c square b square into x divided by ये b into c square. तो ये क्या बच रहा है, TDS is equal to gamma t b square x divided by bc square. Here b square and b will cancel, so rest one b is having. So TDS is equal to gamma t minus bx divided by c square. Equation 14. Again, on putting the value of equation 12, this value in equation 13. Equation 13 means equation 5. Equation 5 को ही हम 13 बोल रहे हैं, मान लो ये x dash is equal to gamma x minus bt. So here x dash is equal to gamma x minus bt. So on putting the value of 12 means the value of gamma. Here gamma का वैल्यू को पुट करेंगे 13 में. तो 13 इक्वेशन ये है मेरा. गामा का वैल्यू मेरा आया क्या, x माइनस बी सॉरी 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. यही ना गामा का वैल्यू है, देखो तो यहाँ पर. और इक्वेशन 12 ये इक्वेशन 12 का वैल्यू को यहाँ पुट किए, गामा के जगह पुट किए. तो गामा का क्या, 1 इंटू एक्स माइनस बी टी डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर. इक्वेशन 15. Now again putting the value of equation 12. Equation 12 means here in 14. The 14 statement is equation 14 is TDS is equal to gamma t minus bx divided by c square. So here put the value of gamma. So the value of gamma is equal to 1 by root under 1 minus b square by c square into this part. This part means t minus bx divided by c square into 1 divided by root under 1 minus b square by c square. Equation 16. So all the combining equation 3 means equation 3 statement of equation 3 is y dash is equal to y and z dash is equal to z. because क्यों हुआ था, y is equal to y dash, z is equal to z dash. क्यों हुआ था बताओ, एनीबॉडी टेल. हेलो y dash is equal to y और z dash is equal to z. क्यों बोले हैं बताओ. हेलो इज देयर एनी डाउट. यस सर. क्यों हुआ ये, y dash is equal to z dash. फिर से बता रहे हैं, ये इसलिए हुआ कि एस डेस फ्रेम ऑफ रिफरेंस, ये एस डेस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस is moving with a velocity along x axis from symmetry y is equal to y dash and z is equal to z dash we can write. ठीक है, इसीलिए इक्वेशन 3 को हम बोल रहे हैं y is equal to y dash, z is equal to z dash. तो अभी हमारा जो इतना भी इक्वेशन मिला है, कंबाइनिंग इक्वेशन 3, 15 एंड 16. 15 इक्वेशन 15